श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। आचार्य मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादिकाल से हमने, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं। एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो। तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता। हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो। हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते। हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरत की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो। हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। प्रेम भिक्षाम देहि। बोलिए साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. Please stand for Aarti. जयति जगत गुरु गुरुवर की, गाओ मिली आरती रसिक वर की. गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की. गुरु पद नख मणि चंद्रिका प्रकाश, जाके उर बसे ताके जाके मातनाथ तव हाथ करे वास. ताते होए माया मोह सब ही निराश. पावे गति मति रति राधा की. गाओ मिली आरती रसिक वर की. रसिक वर की. अरे मन मूढ़ छाड़ना नहीं नर हाथ. गुरु बिनु ब्रह्म श्याम होना देंगे साथ. कोमल कृपाल बड़े कृपा सिंधु नाथ. पाके इन्हें आज तू अनाथ हो सनाथ. इन्हें के आधीन कृपा गिरधर की. गाओ मिली आरती रसिक वर की. गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की. भक्ति योग रस अवतार अभिराम. करे निगमागम समन्वय ललाम. श्यामा श्याम नाम रूप लीला गुणधाम. बाँट रहे प्रेम निष्काम बिनु धाम. हो रही सफल खाया नारी नर की. गाओ मिली आरती रसिक वर की. गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की. लली लाल लीला का सलोना सुविलास. छाया दिव्य दृष्टि बिच प्रेम का प्रकाश. वैसा ही विनोद वही मंजु मृदु हास. करे बस बर बस उच्च अट्टहास. जय हो ऊंची चले चाल वही नटवर की. गाओ मिली आरती रसिक वर की. गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की. जयति जगत गुरु गुरुवर की. गाओ मिली आरती रसिक वर की. गाओ गाओ मिली आरती रसिक वर की. मतप्रेयण राधिका प्रेयण. मधवो
गरियान्यो कृपालुर्मे जगद्गुरु गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजते गुरु सिद्धान्ततस्व भेदे अपि कृपालुर्मे गुरुर्महान् यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सति श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वर योगेश्वरैर्विमृग्याद्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम् यमुनानिकटतटस्थित वृन्दावनकानने महारम्ये कल्पद्रुमतलभूमौ चरणं चरणौ परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वं पीताम्बरपरिधानं चन्दनकर्पूरलिप्त सर्वाङ्गम् आकर्णपूर्णनेत्रं कुण्डलयुगमण्डितश्रवणं मन्दस्मितमुखकमलं सकौस्तुभोदार मणिहारं वलयाङ्गुलीयकाद्यानुज्ज्वलयन्तं स्वलङ्कारान् गलविलुलितवनमालं स्वतेजसा पास्तकलिकालं गुञ्जारवालिकलितं गुञ्जापुञ्जान्विते शिरसि भुञ्जानं सह गोपै कुञ्जान्तर्वर्तिनं नमत मन्दारपुष्पवासित मन्दानिलसेवित परानन्दं मन्दाकिनीयुतपदं नमत महानन्ददं महापुरुषं सुरभिकृतदिगवलयं सुरभिशतैरावृतः परितः सुरभितिक्षपणमहा सुरभीपं यादवं नमत अशरण शरण महाप्रभो तुम स्वामी हम दास की
दीजय कृपा कृपालु मम दीजय गुरु सहवास तुम दीनन रखवार हम अहंकार अवतार अस करु कृपा कृपालु अब दीन बनो सरकार हो ऐसो हो पतित जो पतित न आफुहि मान ऐसे पतित विचित्र को पावन करु तब जान सब भिखारी जगत के जेतिक नाते गान दिव्य प्रेम आनंद के तुम एक साहूकार धनी गुरुवर धाम निवास सुनो मन पुण्य न पुंज सो पाइए जो बनी दीन प्रपन्न रहो गुरु के नित सेवा सोताहि रिझाइए जो मन ते हरि को गुरु को सुमेरो रसना सो सदा गुण गाइए जो क्षण भंगुर जीवन जानी मना क्षण हो जनी व्यथ गवाइए जो सब धामन वारो वृंदावन भय और वृंदावन हो गुरु धाम पैवारो जो गुरु के पद प्रीति जुरी तो भजो चली आवे को ब्रह्म विचारो है हरि निर्मल भक्तन को गुरु है अधमों को उदाहरण हारो और को गुरु हो या न हो गुरु मेरो कृपालु सुभाग हमारो और को गुरु हो या न हो गुरु मेरो कृपालु सुभाग हमारो। लाडली लाल की जय श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय सियव रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय श्री भक्ति धाम की जय श्री युगल कुंज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। Book 2, page 164.
रति रस सागर सब गुण आगर, नटवर नागर श्याम रे। रस सागर सब गुण आगर, नटवर नागर श्याम रे। रति रस सागर सब गुण आगर, नटवर नागर श्याम रे। रति रस सागर सब गुण आगर, नटवर नागर श्याम रे। रसिक रंगीले गुण गर्वीले, रसिक रंगीले गुण गर्वीले, रसिक रंगीले गुण गर्वीले, रसिक रंगीले गुण गर्वीले। छैल छबीले श्याम रे। छैल छबीले श्याम रे। छैल छबीले श्याम रे। छैल छबीले श्याम रे। चिन्मय नीले तनु पट पीले, चिन्मय नीले तनु पट पीले, चिन्मय नीले तनु पट पीले, चिन्मय नीले तनु पट पीले। शीले धरि वस याम रे। हीले धरि वसु याम रे। शीले धरि वस याम रे। हीले धरि वसु याम रे। रति रस सागर सब गुण आगर, नटवर नागर श्याम रे। रति रस सागर सब गुण आगर, नटवर नागर श्याम रे। सरस रसीले नैन नुकीले, सरस रसीले नैन नुकीले, सरस रसीले नैन नुकीले, सरस
निज मन मोहन काम विमोहन निज मन मोहन काम विमोहन निज मन मोहन काम विमोहन निज मन मोहन मोवन मोहन श्याम रे मोमन मोहन श्याम रे मोवन मोहन श्याम रे मोमन मोहन श्याम रे रति रस सागर सब गुण आगर नटवर नागर श्याम रे रति रस सागर सब गुण आगर नटवर नागर श्याम रे जन मन रंजन भव भय भंजन 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 हरि मद गंजन श्याम रे चले मन गंजन श्याम रे हरि मद गंजन श्याम रे हरि मद गंजन श्याम रे यशोमति नंदन कंस निकंदन यशोमति नंदन कंस निकंदन यशोमति नंदन कंस निकंदन यशोमति नंदन कंस निकंदन कंस निकंदन कंस निकंदन कंस निकंदन कंस निकंदन यशोमति नंदन कंस निकंदन यशोमति नंदन कंस निकंदन त्रिभुवन वंदन श्याम रे त्रिभुवन वंदन श्याम रे त्रिभुवन वंदन श्याम रे त्रिभुवन वंदन श्याम रे सुघर सलोना नंद दुधोना सुकर सलोना नंद दुठोना सुघर सलोना नंद दुधोना सुकर सलोना नंद दुठोना को नाचह व्रज बाम रे को नाचह ब्रज बाम रे को नाचह व्रज बाम रे को नाचह ब्रज बाम रे रति रस सागर सब गुण आगर नटवर नागर श्याम रे रति रस सागर सब गुण आगर नटवर नागर श्याम रे लरी घट पुफुरे उरल
Book 1, page 146. मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो मोर मुकुट पीताम्बर धारो चल अल मस्त चाल मतवारो मोर मुकुट पीताम्बर धारो चलल मस्त चाल मतवारो मोर मुकुट पीताम्बर धारो चल अल मस्त चाल मतवारो मोर मुकुट पीताम्बर धारो चलल मस्त चाल मतवारो चल अल मस्त चाल मतवारो चलल मस्त चाल मतवारो शुक सन कार्तिक तो कह प्यारो एकटक लखत समाधि बिसारो शुक सन कार्तिक तो कह प्यारो एकटक लखत समाधि बिसारो एकटक लखत समाधि बिसारो एकटक लखत समाधि बिसारो निज छवि लखी मन सोचत प्यारो उरल गाओ राधा तनु धारो निज छवि लखी मन सोचत प्यारो उर लगाओ राधा तनु धारो उरल गाओ राधा तनु धारो उर लगाओ राधा तनु धारो मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो जा पर काम करो रनवारो अति रस भरे नैन रतनारो जेहि लखी शंभु समाधि बिसारो अति रस भरे नैन रतनारो जेहि लखी शंभु समाधि बिसारो जेहि लखी शंभु
प्राणी ही निज प्राण ही प्यारो, है प्रियतम प्राण होते प्यारो, प्रियतम प्राण होते प्यारो, है प्रियतम प्राण होते प्यारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रणवारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो, राधा तनु लखी सोचत प्यारो, कौन कर्म विधि किए तन कारो, राधा तनु लखी सोचत प्यारो, कौन कर्म विधि किए तनु कारो, राधा तनु लखी सोचत प्यारो, कौन कर्म विधि किए तन कारो, राधा तनु लखी सोचत प्यारो, कौन कर्म विधि किए तनु कारो, कौन कर्म विधि किए तन कारो, कौन कर्म विधि किए तनु कारो, ललित त्रिभंग भेष नटधारो, मुरली मधुर बजावन वारो, ललित त्रिभंग भेष नटधारो, मुरली मधुर बजावन वारो, मुरली मधुर बजावन वारो, मुरली मधुर बजावन वारो, मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो, मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो, मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो, मुरली ने अस जादू डारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो, शिव शंकर गोपी तनु धारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रणवारो, मेरो प्यारो प्यारो मुरली वारो, जा पर काम करो रनवारो, ब्रज रस चुवत राम प्रति प्यारो, परमहंस रह तकत विचारो, ब्रज रस चुवत रोम प्रति प्यारो, परमहंस रहा तकत विचारो, ब्रज रस चुवत राम प्रति प्यारो, परमहंस रह तकत विचारो, ब्रज रस चुवत
प्यारो नव नव रस टपकत तनु प्यारो जेतिक पार लखहु तनु प्यारो नव नव रस टपकत तनु प्यारो नव नव रस टपकत तनु प्यारो नव नव रस टपकत तनु प्यारो
सुंदर की जय। मिलत नहीं नर तनु बारंबार। Oh, is it not in the books? Book 2, page 13. Yes, it's there. Page 13, bhajan number 15. मिलत नहीं नर तनु बारंबार. The human form of life is precious. It is very rare. It is not attained again and again. कबहु क करी करुणा करुणा कर दे निर्देह संसार. And God, out of His utmost grace, gives this gift to us in the form of human birth. उल्टो टांगी बांधी मुख गर्भहि समुझाई हूँ जगसार. Before giving this gift, the child hangs upside down in the womb of a mother. And at that time, God reveals the true nature of the world to him. Samujhaye hu jagsar. Deen gyan jab keen pratigya bhaji Nand Kumar. And when the individual soul makes a promise to God that he will not forget him, he will practice devotion once he comes into this world. So after God imparts divine knowledge, the child makes a promise. Bhuli gayo so dasha bhai puni jyo rahi garbh majar. And here the saint poet Jagatguru Shri Gopaluji says that when the child forgets his promise to God when we come into this world, and we forget God, his condition, his situation becomes as pitiable as it was when he was in the womb of the mother, hanging upside down. In other words, he starts going in the wrong direction. And therefore he suffers. Yaha kripalu nar tanu sur durlabh sumiru sham sarkar. And Shri Maharaj says that this human birth, as do all saints and scriptures, is inaccessible, is not easily attainable even by the celestial gods, the heavenly gods. Therefore,
Be aware, practice caution, and start meditating on the Supreme Personality of God. Sham Sundar. नर्तनु बारंबार मिलत नहीं। नर्तनु बारंबार मिलत नहीं। नर्तनु बारंबार मिलत नहीं। मिलत नहीं। मिलत नहीं। नर्तनु बारंबार मिलत नहीं। कब हूँ करी करुणा करुणा कर। 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 निर्देह संसार मिलत नहीं। संसार मिलत नहीं। निर्देह संसार मिलत नहीं। निर्देह संसार
मिलत नहीं, मिलत नहीं, नर तनु बारंबार मिलत नहीं, नर तनु बारंबार मिलत नहीं, उलटो टांगी बांधी मुख गर्भहि, 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 बांधी मुख गर्भहि, बांधी मुख गर्भहि, उलटो टांगी बांधी मुख गर्भहि, उलटो टांगी बांधी मुख गर्भहि, समुझाए हूँ जग सार मिलत नहीं, समझाए हूँ जग सार मिलत नहीं, समझाए हूँ जग सार मिलत नहीं, समझाए हूँ जग सार मिलत नहीं, मिलत नहीं, मिलत नहीं, मिलत नहीं, मिलत नहीं, नर तनु बारंबार मिलत नहीं, नर तनु बारंबार मिलत नहीं, दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा, दीन ज्ञान
ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा। दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा। दीन ज्ञान जब कीन प्रतिज्ञा। भजी हाँ नंद कुमार मिलत नहीं। 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 मिलत नहीं। मिलत नहीं। मिलत नहीं। मिलत नहीं। नर तनु बारंबार मिलत नहीं। नर तनु बारंबार मिलत नहीं। भूली गयो सो दशा भई पुनी। 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 दशा भई पुनी। दशा भई पुनी। भूली गयो सो दशा भई पुनी। भूली गयो सो दशा भई पुनी। ज्यों रही गर्भ
मझार मिलत नहीं। जो रही गर्भ मझार मिलत नहीं। ज्यों रही गर्भ मझार मिलत नहीं। जो रही गर्भ मझार मिलत नहीं। मिलत नहीं। मिलत नहीं। मिलत नहीं। मिलत नहीं। नर तनु बारंबार मिलत नहीं। नर तनु बारंबार मिलत नहीं। यह कृपालु नर तनु सुर दुर्लभ। 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 सुमिरु श्याम सरकार मिलत नहीं। सुमेरु श्याम सरकार मिलत नहीं। सुमिरु श्याम सरकार मिलत नहीं। सुमेरु श्याम सरकार मिलत नहीं। भजी हाँ नंद कुमार
मिलत नहीं, मिलत नहीं, नर तनु बारंबार मिलत नहीं, नर तनु बारंबार मिलत नहीं, मिलत नहीं, मिलत नहीं। बोले श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। So as we were just chanting, that it is extremely difficult to attain the human form of life. It is not attained again and again. The scriptures remind us repeatedly, Uttishtat jagrat prapya varan nibodhat. O humans, awaken, arise, and seek the holy association of saints, so that through them you may attain divine knowledge, spiritual knowledge, which in turn will lead you to your ultimate goal. Vedavyas says in the Bhagavad, Durlabho manusho deho dehinam chanabhanguraha. It's being repeated again and again. In the Narad Puran also it is stated, Durlabham manusham janma prarthyate tridashairapi. In other words, all living beings, all living creatures, including celestial gods, heavenly gods, beg and pray to the Supreme Lord for the precious human birth. Why? Na manushat shreshthataram hi kinchit. As the scriptures say, Mahabharata, no form of life is superior to the human form. I have just quoted Adi Jagat Guru, the present Jagat Guru Uttam Shri Kripaluji Maharaj, the fifth original supreme spiritual master of this age. And now I will quote the original first Jagat Guru, Adi Jagat Guru Shankaracharya. He also mentions in Vivek Chudamani, he says, Durlabham trayamevaitat daivanugraha karakam mumukshutvam mahapurusha sambhavaha. Manushyattvam mumukshutvam mahapurusha sambhavaha. Meaning that being born a human, having the desire to reach God, even having the slightest interest in God, and meeting a true saint are the three most difficult things to attain. And they are attained only through God's utmost grace. And even out of these three, Manushyatvam, attaining the human form, is the most difficult, is the most important. Why? Because it is only after having attained birth as a human that we can acquire spiritual knowledge, that we can develop love for God and benefit from saintly association. He further states, Manuj dehamimam bhuvi durlabham
samadhigamya surayrapi vanchitam vishayalam pattam apahaya vai bhajat re manujaha kamalapatim. He says, after millions of lives, you've been blessed with the rarest birth, the human birth. So instead of wasting precious moments of life in pursuit of mundane pleasures, temporary pleasures of this world, make a sincere effort to know Him, to reach Him, who is the ultimate goal of your life. So both saints and scriptures value the human birth as something very precious. So what is so special about humans that places them on a higher level than all other living creatures? Let us take a look. The Hitopdesh states, Jnanam hi tesham adhiko vishesho jnanena hinaah pashubhih samanaah. The scriptures tell us, Saint Bhartrihari says, that the blessing that places man on a higher level than all other living creatures is knowledge. Gyan Shakti, the gift of knowledge. Okay, we can understand that it is the power of rational thinking that distinguishes man from other living creatures and places him on a higher level. Man possesses an exceptional quality to distinguish between right and wrong. But what about the superiority of the human body over celestial beings? It is said that human beings are even on a higher platform than heavenly beings, celestial beings, even heavenly gods beg and desire the human birth. They sing glories of the human birth. Gayanti devaah kil geet kani dhanyastu ye bharat bhumi bhage. Because heavenly beings possess far superior knowledge than human beings. They possess far superior body than a human being, as well as great knowledge. So the fact is that our knowledge, human knowledge, places us above only ants, insects, plants, trees, and animals, but not heavenly gods. But if even knowledge is not the determining factor between the determining factor of the superiority of the body over celestial beings, then what is? If that is not the reason, then what is? Tulsidas ji tells us in the Ramayana, Narak Swarg Apvarg Niseni Jnana Virag Bhakti Sukh Deni. Tulsidas ji tells us that human beings are capable of attaining whatever they desire. Whether it be hell, next is heaven, beyond heaven, far beyond heaven is liberation, and even far beyond liberation is divine love. Bhakti, devotion to God. So we have been given the freedom to perform appropriate actions in order to attain whatever we desire. Now you may ask, what about the other forms of life? There are 8.4 million forms of life on earth. Do all these species possess the freedom to act, the freedom to perform actions, in other words, and then reap their fruits, reap the fruits thereof? No. It is only human beings who have been given the freedom to act, to perform actions that will bear results in the future.
other creatures, all other living creatures, merely enjoy or suffer the consequences of actions performed by them in their previous lives as humans. They do not have the right to taste the fruits of their present actions. Even heavenly beings are not given the freedom to perform what is called purusharth, fruit-yielding actions. A heavenly God cannot work towards spiritual upliftment even while in heaven, because that is also what is called Bhog yoni. All other species of life are referred to as Bhog yoni. So it is for this reason that even heavenly beings desire the human form. They desire it so that they may also work towards reaching their ultimate goal, their ultimate aim of God realization as a human. This is why the Vedas say, remind us again and again, Ihache dashakad bodhum prag sharirasya visrasaha tataha sargeshu lokeshu sharirattvai kalpate. O humans, utilize each and every precious moment of life towards the attainment of your ultimate goal. And if you don't, then, as we were just chanting, and as Adi Shankaracharya also states, Punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jathire shayanam, iha sansare khaludustare, kripaya pare pahi murare. Bhaj Govindam, Bhaj Govindam, Govindam, Bhaj Mudhamate. So if we do not make, in other words, make proper use of this human body, we will rotate endlessly in the cycle of birth and death, suffering in lower species of life. This human form of life will be snatched away from us. And along with realizing the precious value of human life, the saints and scriptures say that we must think about its temporary nature, its transience. In other words, it can come to an end at any time. Prahlad, one of the youngest devotees of God, in the Bhagavad, it is stated how he instructs his little Daitya friends in Gurukul. Kaumaracharet pragyo dharman bhagavataniha kohi janati kasyadya mrityukalo bhavishyati. 761. He says, oh my friends, practice spiritual discipline in your childhood. Do not even put it off till your youth, for there's no surety you will live to see youth. Yudhishthir. Let me give you another example. Yudhishthir, the eldest brother of the Pandavas, he's given the title of Dharmaraj. He was so righteous, so knowledgeable. Once he was asked 60 questions by Yaksh. And the most important question was, Kim Ashcharyam? He was asked, what is the most surprising fact in the world? And the wise Yudhishthir replied,
ahanyahani bhutani gacchanti yamalayam sheshastratvam icchanti kimascharyamatah param. He said, we see our fellow beings dying. Every moment we hear of someone passing away. So he says we see our fellow beings dying every moment, going to the abode of Yamraj. And yet, they who are left behind think that they will never die. So this is for sure the most bewildering fact in the world, that in the face of death, no one believes that he will die. In other words, death is something we are all sure to face. That is the ultimate reality of this human body, death. So, the great ones, the knowledgeable ones, the saints have told us, reminded us again and again, that wisdom lies in making a sincere effort to walk on the path of spirituality while you are young, while you are strong, while you are healthy. Yesterday is gone, and tomorrow may not belong to us. There's a wonderful story depicted in one of these Sanskrit verses from Sukti by saints in the scriptures. So let me recite the shlok first. Ratrir gamishyati bhavishyati suprabhatam bhasvanudeshyati hasishyati pankajashrihi Itham vichintyati koshgate dvirefe ha hanta hanta nalinim gaja ujjahar. So this one depicts a little story. Once a bee was sitting inside a lotus, tasting its nectar, enjoying the lovely fragrance of the flower. In the evening, the lotus began to close, as it normally does. And the bee started thinking, it's all right if I stay trapped within the flower for the night. My night will pass nicely. In the morning, the sun will shine in the sky and the lotus will bloom once again. Then I will quickly free myself and fly out. But sad to say, while the bee was planning all this, suddenly an elephant came to drink water from the same pond where the lotus was. And he abruptly uprooted the lotus and placed it in his mouth, swallowing the bee along with it. So this brought about the end of the bee. The poor bee died, thinking in this way. So the saints say that our situation is quite similar to that of the bee. We plan to live a disciplined life, devoted to the seeking of higher truths. We plan to practice devotion, yet our plans fail to materialize. Instead, our life is wasted in the pursuit of more and more sensual pleasures, until the day we breathe our last. So, along with the importance and the transience of life, we also have to think about the certainty of death. Let me give you another example. Dashrath, as you know, who was the father of Lord Ram and the king of Ayodhya, he was so valiant, so powerful, that the title of Atirati had been conferred upon him. Rati, as you know, means charioteer, and one who is able to fight thousands of Rathis on his own is called an Maharathi, and one who is able to fight thousands of Maharathis on his own is called an Atirathi. So he was so courageous, he was so powerful, so valiant. Moreover,
and he was so righteous as well. He was the father of Lord Ram. Moreover, he had the right to go to heaven, to visit heaven while in the human form whenever he desired, and claim half of Indra's kingdom. Indra is the king of heaven. So he had the right to go to heaven and enjoy all those heavenly pleasures whenever he wanted, while in the human form. But when this most valiant, this most opulent king learned about the transience of human life, what did he do? He immediately made plans to renounce his kingdom and all worldly comforts in order to retire to the forest and spend the rest of his days in search of God, searching for Him. We have such examples of such evolved, saintly souls in our scriptures, in Hindu scriptures. So we have to think about the importance, the transience, the fleeting nature, the temporary nature of life, and death as well. Because we cannot, no one can escape the clutches of death. There's another story, wonderful story told in many scriptures. Once a man was hiking in the woods. When it suddenly became dark, the man decided to leave, but some animals blocked his path. So, trying to get away from them, he penetrated further into the wood. While running, he saw an old woman with arms outstretched, as if to embrace him. He got frightened. He ran in the opposite direction. And while running, again, he stepped onto a grassy patch, which was really a deep hole in the ground, a deep pit. And his feet became entangled by the creepers. So he stepped onto a grassy patch, and his feet became entangled, and he found himself hanging upside down from above the pit, hanging down from the tree. These creepers entangled his feet, and he was hanging upside down. Now, there was a snake at the bottom of the pit, waiting for the man to fall so that it may bite him. 2 rats, one white and one black, were nibbling at the tree which held these creepers from which the man was hanging upside down. So these 2 rats were nibbling away at this tree. And to make things worse, there was a beehive on top of that tree. And the bees from the beehive started stinging the man on his face. So just imagine what a risky situation this man is in. But even in this most precarious condition, it was seen that the man wore a somewhat happy expression on his face. Why? Because some of the honey from the beehive was slowly trickling onto his lips. And he was finding it very pleasurable. The sweetness, the sweet taste of honey trickling onto his lips. In this pleasure, he had forgotten about the snake, the bees, of course, and the rats. We will all say that this man is extremely foolish. But in fact, we are more foolish. You see, the animals blocking the man's path are diseases or illnesses that afflict us in life. And the old woman symbolizes old age that wants to take us in its lap. And the 2 rats, white and black, are likened to day and night that are nibbling away at our life,
throwing us closer and closer to death as time passes. And the snake at the bottom of the pit represents time, the exact moment of death. So the snake represents time that wants to devour us in the form of death. And the bees signify the endless desires that agitate our mind, that keep our mind restless, even more so. And yet, the little bit of sense enjoyment, the little bit of pleasure we experience from time to time in life, the saints say, makes us so intoxicated that we forget what a dangerous situation we are in, what a temporary, what an uncertain and risky condition we are in. दो बातन को भूली मत जो चाहसी कल्याण नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान. And that is why Narayan Goswami, a saint by the name of Narayan Goswami, says to seekers, do not forget two things: death and God. Death first, God next. Why not God first? Because even if we realize the importance of God, we may postpone, we may procrastinate, thinking that we have many years to live. Oh, we will practice devotion, I'm so young. I've got many years to practice devotion, maybe in old age. So we may procrastinate, thinking that we have many years to live. But keeping death in mind at all times will get rid of that tendency. So keeping this spiritual knowledge in mind. Saint Kabir Das has said, Kabira sab jag nirdhana, dhanvanta nahi koi, dhanvanta soi janiye, jahi prem dhan hoy. He says, no one in the world is really wealthy. No one is rich. Kabira sab jag nirdhana. Only consider him to be a rich man, he who is enriched with the love of God. So you understand that is the aim of our life, the human life. This is the purpose of this human life. This is why it has been given to us. Therefore, so we should constantly meditate on the fact that our most valuable treasure in life lies not in the worldly objects that are perishable, not in the worldly relationships that are temporary, but in the love, in the divine knowledge and love of God, of the Supreme Being, that are everlasting. So with these words, Bole Vrindavan Bihari Lal ki, Shrimad Sadguru Sarkar ki, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. We'll chant for 5 minutes. If we all promise not to forget what we listened to for so long, then you'll only be thinking of the chanting. But spiritual knowledge is of even more importance until we make a firm decision in our mind.
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओ हरे राम
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. बोलिए अलबेली सरकार की जय, लाडली लाल की जय. So now we have Bhog. I will sing the Bhog and you can follow after me. We have Bhog offering. Does everyone have books? Do they need books? Does anyone need books? अब नार तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया. अब नार तरसाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया. ओ अब नार तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया. अब नार तरसाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया. यद्यपि यह सच है नहीं तुम कहो, यद्यपि यह सच है नहीं तुम कहो. भूख प्यास लागती रसिया, भूख प्यास लागती रसिया. ओ तदपि भाववश रज छछिया लगी, चोरी करत फिर्यो रसिया. तदपि भाववश रज छछिया लगी, चोरी करत फिर्यो रसिया. ओ अब नार तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया. अब नार तरसाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया. भाव भरा केले का छिलका, भाव भरा केले का छिलका. विधुरानी घर खायो रसिया, विदुरानी घर खायो रसिया. ओ भावहीन दुर्योधन व्यंजन, नहीं टुक मन भायो रसिया. भावहीन दुर्योधन व्यंजन, नहीं टुक मन भायो रसिया. आओ आओ भोग लगाओ रसिया, भोग लगाओ रसिया. अब नार तरसाओ रसिया, अब नार तरसाओ रसिया. आओ आओ भोग लगाओ रसिया. आओ भोग लगाओ रसिया. ओ अब नार तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया. अब नार तरसाओ रसिया,
रस शबरी के जूठे मुख, रस शबरी के झूठे मुख, जो रस शबरी के जूठे मुख, रस शबरी के झूठे मुख, बेर खाय पायो रसिया, बेर खाय पायो रसिया, बेर खाय पायो रसिया, बेर खाय पायो रसिया। ओ जनकपुरी के राजभोग महा, सोरस नहीं पायो रसिया, जनकपुरी के राजभोग महा, सोरस नहीं पायो रसिया। आओ आओ भोग लगाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। आओ आओ भोग लगाओ रसिया, श्याम आओ भोग लगाओ रसिया। अब ना और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, अब ना और तरसाओ रसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। हो मानत हो भावहीन हो, मानत हो भावहीन हो, मानत हो भावहीन हो, मानत हो भावहीन हो। पै सुन खरी खरी रसिया, है सुन खरी खरी रसिया, पै सुन खरी खरी रसिया, है सुन खरी खरी रसिया। ओ कत कृपालु पय पियो पूत नहीं, याते अब आ जाओ रसिया, कत कृपालु पय पियो पूत नहीं, याते अब आ जाओ रसिया, याते अब आ जाओ रसिया, याते अब आ जाओ रसिया। रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया, 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 हो रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया, हो रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया, रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया, रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया, रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया। ओ खूब खाओ रसिया, आओ आओ रसिया, भोग लगाओ रसिया, आओ आओ रसिया, खूब खाओ रसिया, आओ आओ रसिया, भोग लगाओ रसिया, आओ आओ रसिया, हो रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया, हो रसिया हो रसिया, मेरे मन बसिया,
रसिया हो रसिया मेरे मन बसिया, रसिया हो रसिया मेरे मन बसिया, अब नार तरसाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया, अब नार तरसाओ रसिया, आओ भोग लगाओ रसिया। बोले श्याम रसिया की जय, लाडली लाल की श्री राघवेंद्र सरकार की जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु की युगल कुंज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Radhe Radhe. We have some announcements. We are indeed privileged to have Shri Rameshwari Didi leading us into a 3-day Memorial Day retreat. Half the time has passed, and I know several of you have been here. For others that have not been here, there is a fun-filled program this afternoon as well as tomorrow till noon. So please, the schedule is out on the front desk. Please avail of the opportunity. We have picnic in the afternoon, we have Keertan, we have lectures, we have lighter moments with Shri Maharaji. So there's a lot of different activities. And then tomorrow morning we will start at 6 a.m. and we will end with Guru Paduka Pujan right after noon. So please come. We look forward to seeing you there. Starting tomorrow, we have Swami Nikhilanand also here. So his lecture series for a week on 10 characteristics of devotion starts tomorrow evening from 7 to 8:30. It will continue during the week, so we invite you to attend that lecture series as well. First week of camp starts tomorrow. So a lot of excitement around that. We have over 120 kids that are signed up for the entire 9-week duration, some for 1 week, some for a few weeks, some for all the 9 weeks. So there's a lot happening there as well. If you haven't signed up yet, I think please do sign up for the first week. Which starts tomorrow. I always tell people that it is better to find out about the camp and whether you like it or not earlier in the process. Don't come in week 8 and then regret, oh my gosh, this was this program and we missed the first 7 weeks of it. So we look forward to seeing you all at the camp as well. I think we have about 50 kids that are already signed up for the first week. And then there is the overnight a camping trip with Swami Nikhilanand also, that is next weekend. So front desk will have a lot more information about that as well. And then we have the 12-hour Keertan that is in the month of June. I think it is the Saturday, June 24th, and it is going to be on Shama Sham Geet. We look forward to having you here for those 12 hours as well. Siddheshwari Didiji will be back at Yugal Kunj to lead us through that 12-hour program. And then if there is any other questions, I think front desk, you can reach out at the front desk, or I'll be outside in the lobby as well. Radhe Radhe. So if you'd like me to come again and again, every year, you must try to attend most of the camp that is left. So otherwise I will not be coming. No, I mean, you've been very good. So everyone has been coming, and there has been greater participation, especially in the evening lectures, I noticed. So you are eager seekers and seeking knowledge. And of course,
Kirtan and divine love, bliss, which you get a taste of that here in the association of Shri Maharajji's Tattva Gyan, the knowledge, the Keertans, all the bhajans that we sing are composed by our spiritual master, Jagat Guru Shri Kripaluji Maharaj. Even the tunes have been composed by him. So that is what you are relishing. You're relishing that nectar, that sweetness of his philosophy, which is the essence of all the scriptures, as well as the Keertans and bhajans composed by him. So I will come only again, and I may come sooner, if all of you continue to participate in the rest of the camp, and more next week as well. Radhe Radhe. Please So stand. let us stand for Aarti. आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नथवारी की भुवन सिर कनक मुकुट झलके दुहन श्रुति कुंडल भल हलके दुहन दिग प्रेम सुधा छलके चसीले वैन रसीले नैन गसीले सैन दुहन मैनन मन हारी की बनवारी नटवारी प्रीतम प्यारी की बनवारी नटवारी की दुहन दृग चितवानी परवारी दुहन लट लटकनी छवि न्यारी दुहन वो मटकनी अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान रसन दमकान दुहन गे सर छवि न्यारी की बनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नटवारी एक और पीतांबर पहरे एक और नीलांबर लहरे दुहन और मोती न छहरे कंकनन कनक किंकिनी जनक दुफुरन भनक दुहन रुन जुन धुनि प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नटवारी की एक सिर मोर मुकुट राजे एक सिर चुनरी छवि छाजे दुहन सिर तिरछे भल बाजे संग ब्रज बाय लाडली लाल गाम गलदार कृपाल दुहन दृग चारी की बनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी नटवारी की श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र
कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम गंधर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीठ मानव तरि तरुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम पटपीठ मानव तरि तरुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्री राम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल्य चंद्र दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल्य चंद्र दशरथ नंदनम श्री राम सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उधार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम श्री राम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम लाडली लाल की जय श्रीमद सतगुरु सरकार की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय श्री भक्ति धाम की जय श्री युगल कुंज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय